गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें कुछ हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने कुछ पढ़ा था, हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ में हमने स्ट्रेस की बात की थी, स्ट्रेन की बात की थी। तो ऐसे दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और नेक्स्ट वन इज़ लेटरल स्ट्रेन। So what is longitudinal strain? Longitudinal strain is basically the ratio of axial deformation. It will be tensile or compressive to the original length of the body is known as a longitudinal strain. Same as for lateral strain, the strain at right angle to the direction of applied load is known as lateral strain. Now we are going for the Poisson ratio. When we are taking the ratio of longitudinal strain to the lateral strain, you get the value of some constant, and this constant value is known as Poisson ratio. So you can say the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is a constant for a given material when the material is stressed within the elastic limit. The ratio is called Poisson ratio. So you can say in the formula Poisson ratio, it is denoted by mu equal to lateral strain divided by longitudinal strain. Same as going for volumetric strain. Volumetric strain basically the ratio of change in volume to the original volume of a body is called volumetric strain. It is denoted by EV. V जो है वो suffix में है. EV is equal to change in volume divided by original volume. अब हम इसी पे बेस एक प्रॉब्लम ले लेंगे। प्रॉब्लम दिया गया है, डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए स्टील बार विच इज़ 4 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड एंड 20 मीटर थिक and is subjected to an axial pull of 30 kN. This 30 kN, that means that is the tensile load in the direction of its length. The given in modulus of elasticity is given 2 into 10 raised power 5 Newton per mm square, where is Poisson ratio is also given, that is the constant, that is 0.3. अब हम इसका देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में आपको जो स्टील बार है उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस गिवन है, आपको टेंसाइल लोड गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, पॉइसन रेशियो गिवन है। सो एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो दैट मीन्स स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. So by this formula you can get the value, you can calculate the value of strain. So strain is equal to stress upon modulus of elasticity. You know the value of stress, that is the load per unit area. You put the value of P upon A into E. So you can easily calculate the value of strain by putting these values on this formula. You get the value of strain, and you have to see the value is 0.0025. There is no unit because that is the ratio of same dimension. But when you, as you know, strain is change in length divided by original length. By putting the value of strain, you get the value of change in length, that is the delta L. So you can get the value of delta L is equal to 1.0 mm. Now you have to calculate the Poisson ratio. Poisson ratio, as you know, that discussed in the previous discussion, the lateral strain divided by longitudinal strain. Lateral strain is given 0.3 into 0.0025. You get the value of lateral strain by putting the value of lateral strain divided by change in breadth divided by original breadth. Easily you can calculate the value of change in breadth. Similarly you can calculate the change in thickness. यही आपको इसमें सॉल्व करना था। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बच्चों।